Good morning. Vandana? Still wait, people are joining. Let them join. It's Vandana, switch on your camera. Am I audible to you, Vandana? No? Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Did you appear for the mark due yesterday? Rajesh, I'm asking you. Yes, no, ma'am. थोड़ा सा मैम थोड़ा रिलेशन के यहाँ शादी में है तो थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं. Okay, switch on your cameras. We'll start the class. In the last class, I told you we discussed about performance appraisal, right? We discussed about what is performance appraisal, what is the difference between performance appraisal and potential appraisal, then what benefits do, what is the need of performance appraisal in the organization. Okay, we discussed these points, the need of performance appraisal in the organization one by one. No answer, why? We discussed it in the last class, right? Yes, ma'am. Now, so today in this class, and also in the last class, I gave you idea about. Good morning, ma'am. Good morning. I gave you an idea about what is the difference between performance appraisal and potential appraisal, right? So can someone quickly tell me what is the difference between performance appraisal and potential appraisal? And those of you who did not appear for mark Q just because it was a test, this is not good. ये ठीक बात नहीं है.
I respect those people more who appeared for the exam despite the fact they had not prepared the chapter well, than those people who simply chose to quit the exam. This is not a good thing. Okay. मार्कियों से बहुत कुछ वैसा इम्पैक्ट तो नहीं होता है कि आप इतना ज्यादा डर जाते हैं. The attendance of the class goes down the day I announce my mark you. Otherwise, in class, the attendance is full. Why do you do this? कम मार्क्स आएगा और ठीक है कम मार्क्स आएगा, लेकिन बात ये भी है कि कम मार्क्स भी क्यों आएगा? I've taught you the chapter. There were people who gave 100% answer. There were people, I just wanted to check the concept that you have or not. I always stress on concept. Exam तो pass कर ही जाओगे, कोई भी कर जाता है, तो फेल नहीं होता यूनिवर्सिटी के एग्जाम. But it's all about the concept. You have 90% marks, you don't have concept, you have 70% marks, but you know what you're studying. That is more respectable. If you keep quitting the classes, if you keep quitting the exams like this, you run away from things that test you and improves you, you'll never be able to improve. Mark my words. Chalo, video on karo. Switch on your videos, everyone. So we were studying performance, the difference between performance appraisal and potential appraisal. This I'll give you in detail क्योंकि आपके syllabus में एक अलग से topic दिया हुआ है potential appraisal का, तो थोड़ा detailed आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में. Short notes पे भी आएगा, तो you should have the content to write it. Now, continuing the performance appraisal thing, do you think, first of all, in the last class we dealt with the need of performance appraisal, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can we quickly do a recap of all that, revise it, all that? देख के बोलो क्या क्या था. Yes, need, ma'am. Promotion. Purpose था, need था, promotion, wage एक- and compensation, determination, reward, transfer. पर्सनल रिसर्च भी होगा. Determination of probation period, determination of training period, or transfer. पर्सनल रिसर्च है. Yes, ma'am. Personal research है. This was the need of performance. This is the need of rather performance appraisal in the organization. But do you think that performance appraisal is one thing which is needed only by the organization? Is it not needed by the employees? Is it not needed by people who are working? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How? Rest of you switch on your cameras. आप लोग क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो मार्कियों में दिखता है फिर हमको. आप कैमरा ऑन कीजिए. When I'm making you understand the concept, please switch on your cameras. Vandana Singh. Anisha, you were there in the class, no? Yesterday. You had logged in. Why didn't you appear for MAQ? डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, इतना हो गया था. हम ज्वाइन किए थे बट नहीं, फिर डिस्कनेक्ट हो गया. Because I remember that you had logged in. अगर वैसा कुछ होता है नेटवर्क का इशू जो कि बहुत जेन्युइन इशू है, तो आप मैसेज क्या कीजिए मुझे, ठीक है? Because logging in, appearing for MAQ and not being able to appear for test is not right. वो हम आपका बाद में भी कभी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. Because you were there, I knew it. ठीक है? Rest, Vandana Singh, I'm going to remove you. 10 times I've called your name and you have not responded. You were the first to join. She has joined and she has slept. Right. The rest of you, switch on your cameras. Okay, so we were talking about performance appraisal thing. Now, performance appraisal is something which is not needed only for the administration point of view, like only by the organization, but it is important from the point of the employees also, because this leads to his self improvement. Test आपके लिए क्यों important होता है?
टेस्ट आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आपको कम मार्क्स आ जाए तो आप कोई बहुत बड़ी बात हो गई। कम मार्क्स आना या बहुत अच्छा बोल देना ये फाइनल कोई एग्जाम नहीं है, आप कोई ऐसा नहीं है लाइफ चेंजिंग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बट द फैक्ट कि अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो, चैप्टर पढ़ने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हो, सब कुछ पढ़ा देने के बाद भी, सो देयर इज अ फ्लॉ, देयर इज सम प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी फिक्स्ड। इसका सिंपली यही मतलब होता है। एक टेस्ट आपकी जिंदगी नहीं बदलती है, ठीक है। ये सब जो क्लास टेस्ट वगैरह होता है, ये सब छोटा छोटा टेस्ट क्यों होता है? इट्स जस्ट स्मॉल स्टेप्स टू द बिग माइलस्टोन्स ऑफ योर लाइफ। डोंट रन अवे फ्रॉम देम। आप नहीं आंसर कर पाएंगे, इट्स ओके। अगर आप सच में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, यू गो बैक एंड रीड, ओके, यू गो बैक एंड रीड। इंटरव्यू में भी कई जगह पे जहाँ इंटरव्यूज होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, बहुत पढ़ने के बाद भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है जो आपको नहीं आता है, तो आप ऐसा नहीं कहते हैं, यू नो, अ स्मार्ट आंसर टू दिस इज नॉट द आई डोंट नो। स्मार्ट आंसर टू दिस इज दैट सर आई विल गो बैक एंड रीड, मैम आई विल गो बैक एंड रीड, ओके। सो यू शुड हैव दिस लर्निंग कैपेसिटी। यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का सेकेंड नीड भी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूज दैट the organization has out of performance appraisal, but it is also about the self improvement scope. हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का स्कोप बनेगा। यहाँ अप्रेजर का भी एक रोल होता है। जैसे सपोज करो कि आई एम द अप्रेजर एंड यू पीपल आर द एम्प्लॉइज, ओके। नाउ अगर कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, I have already told you that I respected those of you who appeared for your mark you exams, कि नहीं आता है डर के मारे अपेयर ही नहीं करेंगे, ये बहुत गलत एटीट्यूड है। जो अपेयर किए, जो आंसर नहीं कर, जो कर पाए उनके लिए ठीक है, पर जो आंसर नहीं कर पाए, if I start insulting them, okay, if I insult them in front of the class, तुमको नहीं आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको हम पढ़ा दिए हैं उसके बाद भी नहीं आता है, you are a dull dullard of the class and this and that, क्या उस एम्प्लॉय का, स्टूडेंट हियर, क्या तुम्हारा मोरल डाउन नहीं होगा पढ़ने का? यस मैम। होगा। तुमको खराब लगेगा कि मैम सबके सामने क्यों बोल दी? बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इफ अनलेस इट इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन। क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन में आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं और फिर भी आप गलत करते हैं। बट ये पढ़ाई लिखाई की चीज, ये डांटना या सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, ऐसे पढ़ाई या दिस इज नॉट द रोल ऑफ अ टीचर, okay? A teacher should be a person who should motivate you to study further. Now यही काम अप्रेजर से भी एक्सपेक्टेड होता है कि अगर आपको अगर ये लग रहा है कि किसी एम्प्लॉय को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम तुमको अप्रेज कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट तुम गलत बोल रहे हो। जैसे सक्सेशन प्लानिंग वाज अ क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड टू मोस्ट ऑफ यू, बट few could understand the difference between career planning and succession planning. तो ये एक conceptual difference है। Similarly, organization में भी जब appraiser appraise करता है आपको, तो वो जानता है कि आपका lacuna, आपका loophole, आपका flaws कहाँ है। But if the appraiser really wants the employee to improve, the appraiser will talk to that person in a spirit of cooperation, right? In a good spirit. आप उसको केबिन में बुलाइए और फिर उसको पॉइंट आउट कीजिए कि यहाँ 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 आप फॉल्टर कर रहे हैं एंड यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दीज एरियाज। इज देयर एनीथिंग वी कैन असिस्ट यू विथ और हेल्प यू विथ? समझ में आ रही है बात? सो जब नीड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखोगे तो उसमें दोनों नीड लिखना। नीड और इम्पोर्टेंस तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए बता रहे हैं। नीड में जब लिखोगे तो ये लिखना कि परफॉर्मेंस अप्रेजल is needed by the organization, is needed in both ways. One, from organization's point of view, जो उसका administrative part हो गया, जो आप लोग सब लिख चुके हैं, ट्रेनिंग, प्रोविजन, ये जो लास्ट क्लास में हम लोग किए, administrative part है वो। और एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है तो क्या होता है? That should be done in good spirit. Okay? Yes. Understood?
Now, Yes, ma'am. now you write the importance. ये एक अलग topic है आपके इसमें syllabus में 4-5 point importance का लिखो. Just write down. Point number 1, importance of performance appraisal. A good system of performance appraisal helps the supervisor Ma'am, repeat. A good system of performance appraisal helps the supervisor to evaluate the performance. A good system of performance appraisal helps the supervisor to evaluate the performance of his employees systematically and periodically. Systematically and periodically. It also helps them to assign work according to the suitability of employees. It also helps them. It also helps them to assign work. It also helps them to assign work according to the work suitability. Next. ये सारा पॉइंट्स तुम जानते हो, बस हम लिखवा दिए क्योंकि अलग अलग टॉपिक में दिया हुआ है तुम्हारे सिलेबस में, सो यू जस्ट हैव द कंटेंट प्रिपेयर्ड. बाकी आप जानते सारा पॉइंट्स हैं. सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स टू गाइड एंड करेक्ट द एम्प्लॉइज constructively for efficient performance. Constructively for efficient performance. मैम करेक्ट के बाद क्या, टू करेक्ट द, To guide and correct the employees constructively. जो अभी पॉइंट हम समझाए कि कंस्ट्रक्टिव वे में करेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉयज को डिमोरलाइज कर दीजिए. Constructively for efficient performance. For efficient performance. Next. The ability of the staff is recognized. The ability of the staff is recognized and can be rewarded by giving special increments. And can be rewarded by giving special increments. Done? Now which point is this? Ma'am, Third तीन हो point. गए. तीन हो गया. और लिखिए, the ratings can be used to evaluate the effectiveness of training programs. The Evaluate ratings, के बाद फिर training programs, training.
Ma'am, evaluate the effective training programs. Effectiveness of training programs. Effectiveness of training programs. Next, systematic appraisals. Systematic appraisals will prevent grievances Systematic appraisals will prevent grievances and develop confidence among the employees if they are convinced of impartial evaluation. If they are convinced of impartial evaluation. मतलब कहने का जैसे हम क्लास में मार्क क्यों ले रहे हैं एंड आई एम पार्शियल, यू गाइस थिंक कि आई एम पार्शियल टुवर्ड्स सर्टेन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स मेरे फेवरेट हैं, ऐसा आपका परसेप्शन बन गया है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे फेवरेट हैं और इवन इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, इवन इफ दे आर नॉट आंसरिंग, आई गिव मोर मार्क्स टू देम. ठीक है, ये परफेक्शन है. तो आपको मार्क क्यू का रेलेवेंस बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप मार्क क्यू से बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, ऐसा होगा ना. एक डिससैटिस्फैक्शन, एक ग्रीवांस की फीलिंग आपके मन में हमेशा रहेगी. सिमिलर थिंग इज विद परफॉर्मेंस अप्रेजल. और ये सब होता है, यू नो, दिस इज अ theoretical part, but when you go in organization, there are people who are boss's favorite and they get more appraisal than a normal person who is working equivalent to that person. तो हम आपको जो फ्लॉज होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का उस वक्त बताएंगे. बट इन जनरल, talking generally, if the employees are convinced of the fact कि the process of appraisal is impartial, तो वो satisfied रहेंगे, उनको grievance नहीं होगा. Grievance मतलब क्या होता है? शिकायत. और complaint मतलब क्या होता है? शिकायत. दोनों में कोई डिफरेंस है? मैम, ग्रीवेंसेस में कंप्लेन के बेसिस पे कुछ क्या मतलब मैम लॉस होता है कंपनी को, उसको पेमेंट करना पड़ता है किसी रीजन से, मैम मतलब फाइन देना पड़ता है. नो मैम कंप्लेन ही तो होता है ऐसे. there's a difference. See, there's a difference between the grievance and complaint. If you people, आपकी क्लास में एसी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपकी क्लास में एसी काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि इतने दिन से एप्लीकेशन डाला हुआ है और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है इस पे. ठीक है, उसके बाद मैम आ गई क्लास में, मैम को बोला देखिए ना मैम, हम लोग को इतनी दिक्कत होती है पढ़ने में, एसी नहीं चल रहा है मैम, कैसे पढ़ेंगे, छोटे से रूम में, कंजस्टेड है, दिस एंड दैट. उसके बाद नीचे गार्ड मिल गया आपको, नीचे गार्ड बोल रहा है अरे क्लास में क्यों नहीं हो, बाहर घूम रहे हो, अरे तो एसी नहीं चल रहा है तो क्या करें. ठीक है, क्लास में नहीं बैठ सकते. व्हाट इज दिस, कंप्लेन और ग्रीवेंस? ग्रीवेंस. कंप्लेन. ठीक है, पहला केस समझ में आया, कुछ लोग ग्रीवेंस बोल रहे हैं, कुछ लोग कंप्लेन बोल रहे हैं. दूसरा केस दे रहे हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आप ये करके आएंगे. एचआर पढ़ रहे हैं इसीलिए हम ग्रीवेंस और कंप्लेन के बीच का डिफरेंस बता रहे हैं आपको. ये आपका होमवर्क है. केस 1 समझ में आया, आपने गार्ड को बोला, आपने टीचर को बोला, आपने फ्रेंड को बोला कि एसी चल रहा है, नहीं हो रहा. उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन दिया और कॉलेज के मैनेजमेंट को सबमिट किया. ठीक है, कॉलेज के मैनेजमेंट को जाके लिख के प्रॉपर सारे बच्चों के साइन के साथ कॉलेज में ये एप्लीकेशन दिया कि एसी नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है एंड इट्स टू हॉट टू सिट इन द क्लास एंड अपीयर एंड डू ऑल द क्लासेस एट अ स्ट्रेच फॉर 4 क्लासेस. ये क्या हुआ, ग्रीवेंस की कंप्लेंट? कंप्लेन लग रहा है मैम, ये कंप्लेन. प्रॉपर कंप्लेन लग रहा है मैम. ये होमवर्क है तुम्हारा. ठीक है, कंप्लेन तो रिटन या फिर ओरल भी हो सकता है,
बट अगर उसको सॉल्व नहीं हुआ है तो उसके बाद उसको रिजॉल्व करने के लिए ग्रीवांस दिया जाता है। फॉर्मल कंप्लेंट को बोलते हैं। सफरिंग है इसमें तो। Okay, Ashish, I got your answer. I heard your answer, but the final answer I'll tell you in the next class. जब सारे बच्चे ग्रीवांस और कंप्लेंट के बीच में डिफरेंस ढूंढ करके आएंगे, ठीक है? ये एचआर का टर्म है। एचआर तुमको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देता है। There are so many differences in the words that we use interchangeably. एकदम हम लोग साथ साथ में यूज कर लेते हैं कि दोनों चीज, जॉब एनलार्जमेंट एक ही चीज है, जॉब एनरिचमेंट एक ही चीज है, जॉब से जितना वर्ड आया सब एक ही चीज है, वैसा नहीं होता है। बहुत टेक्निकल डिफरेंस होता है वर्ड्स के बीच में, ठीक है? और तुम अपना जब किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, ऑफर लेटर बहुत ध्यान से पढ़ना और तभी साइन करना उसको, क्योंकि वहां पे बहुत सारा ट्रिक होता है। अंडरस्टूड? उस ऑफर लेटर में जो एचआर बनाता है, इट्स नॉट इजी टू बी एचआर। फाइन। सो ये ग्रीवेंस और कंप्लेंट के बीच का डिफरेंस आप लोग नेक्स्ट क्लास में ढूंढ के आइएगा। ना आशीष, आई गॉट योर आंसर। फाइन, बट आई द फाइनल आंसर आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो ये हुआ परफॉर्मेंस अप्रेजल का इम्पोर्टेंस। नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल का इम्पोर्टेंस, ठीक है? नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू द मेथड्स, देखो मेथड्स है, मेथड्स हम आपको क्लास में नहीं लिखवाएंगे, यहाँ जैसे ऑनलाइन क्लास में। आई विल नॉट मेक यू राइट, आई विल गिव यू द फोटो ऑफ बुक, वो आप खुद लिखिएगा, अपने से शॉर्ट कर लेना जैसे जो तुमको लिखना ठीक लगेगा। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू इन द क्लास। हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे, वो हम भेज देंगे और आप पढ़ के एक बार आइएगा। अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल से। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में हमने जितनी बात की उस हिसाब से ये लगता है कि इट्स अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट बाय द एचआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में और भी 2-4 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पोटेंशियल अप्रेजल, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ाना होगा क्योंकि ये नोट्स में आ सकता है लिखने। इसका लिमिटेशंस क्या है? Can you just highlight the limitations of performance appraisal? तुम सोच सकते हो कि इसका क्या limitations हो सकता है? देखो, एक limitation क्या होगा? अगर performance appraisal Mahi, I'm unable to switch on the camera. It's okay, you unjoin and then you join, Mahi. अनजॉइन कर लो, हो जाता है नेटवर्क इशू कभी कभी। देखो, आई टोल्ड यू कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जब होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस भी मार्क किया जाता है इंडिविजुअल का, और सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस भी मार्क किया जाता है। बट व्हाट इफ जो पैरामीटर्स हैं आपको रेट करने का, वो पैरामीटर्स ही इररेलेवेंट हो सकता है ना, कि जो जैसे रेगुलरिटी, योर अटेंडेंस, योर इनिशिएटिव, योर वर्क एज अ टीम वर्क, योर क्रिटिकल बिहेवियर, ऐसे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे कि एम्प्लॉयज को रेट किया जाता है। अगर ये पैरामीटर्स ही इररेलेवेंट टाइप के हों तो क्या सही से अप्रेजल होगा? नो मैम। क्या पैरामीटर्स चूज किया जा रहा है अप्रेज करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्लास में जब मेथड पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कितना सारा मेथड्स होता है अप्रेजल करने का, और ऑर्गेनाइजेशन अपने सूटेबिलिटी अपने हिसाब से उन मेथड्स को अडॉप्ट करती है कि किस मेथड से उसको रेटिंग करना है। जैसे रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ऐसी कंपनीज 360 डिग्री अप्रेजल मेथड का यूज करती हैं। 360 डिग्री बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है? तो राइट डाउन लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, लिखो। लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पहला पॉइंट, इफ द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द असेसमेंट if the factors included in the assessment are irrelevant, the result of merit rating will not be accurate. The results of merit rating will not be accurate.
The results of merit rating will not be accurate. Second, different qualities to be rated. मेरिट रेटिंग मतलब क्या होता है मैम? क्या कैसे बोलो? मेरिट रेटिंग आप बताए ना, मेरिट रेटिंग। ऐसा तो कुछ नहीं बताए। मेरिट रेटिंग मेरिट रेटिंग तुम्हारे में क्या वही मैम। मेरिट है, तुम्हारे में परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है? जैसे तुम्हारे में क्या मेरिट है, तुम रेगुलर हो, तुम इनिशिएटिव लेते हो, तुम्हारे में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तुम्हारा गोल ओरिएंटेशन है, तुम अपना काम टाइम पे खत्म करते हो, यही सब मेरिट। हम कुछ और लिख दिए थे, हम इसलिए पूछे। हाँ लगा हमको, कोई बात नहीं, ऐसा डाउट हो तो प्लीज आस्क। खूबी ना मैम। हाँ next, different qualities to be rated may not be given proper weightage in certain cases. In certain cases. नोट के बाद May not be given, suno, different qualities may not be given proper weightage in certain cases. ये होता है। In certain cases क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? देखो, जो रेटिंग होती है ना, जब रेटिंग मेथड पढ़ाएंगे तो उसमें 5-6 क्वालिटी चूज की जाती है। जैसे डिपेंडेबिलिटी, तुम कितने डिपेंडेबल हो, तुमको कोई काम सौंप के ऑर्गेनाइजेशन कितना शांत रह सकती है कि वंस दिस वर्क हैज बीन असाइन्ड टू सुमन, नाउ नोबडी हैज टू वरी, ही विल फिनिश इट ऑन टाइम, वो अपनी टीम भी अच्छे से मैनेज कर लेगा। हाउ डिपेंडेबल यू आर। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं हमारे घर में भी, डिपेंडेबल पीपल। हमने उनको Yes, ma'am. काम बोल दिया, उसके बाद हमें ये टेंशन नहीं होती कि वो करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा ही somehow. This is known as the dependable quality of your personality. अब वेटेज, जैसे एक क्वालिटी हमने डिपेंडेबिलिटी ले ली, दूसरी क्वालिटी हमने इनिशिएटिव ले लिया, तीसरी क्वालिटी हमने टीम वर्क ले ली, चौथी क्वालिटी हमने अटेंडेंस ले लिया। तो इस तरीके से ये पांचों का वेटेज सेम हो, यानी 20 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये, 20 मार्क्स का ये, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव को ही कम वेटेज दे दे। सो इन दैट केस प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो एक्चुअल टारगेट है वो फुलफिल नहीं होगा। समझ में आया वेटेज का क्या मतलब होता है? यस मैम। अरे दिस इज सिंपल, तुम लोग बोर्ड का एग्जाम दियोगे तो होता है ना कि इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, ये 80 हाँ, प्रेशर एंड ऑल। हाँ वही होता है वेटेज। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Some factors are highly subjective. Some factors are highly subjective, like personality of the employee, some factors are highly subjective, like personality of the employee and initiative. And initiative. The actual rating cannot be made on scientific lines. The actual rating cannot be made on scientific lines. मैम एक बार फिर से, एक्चुअली रेटिंग cannot be made on scientific lines. ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं पहले? इस पॉइंट को पढ़ो और कोई एक्सप्लेन करो। मैम मतलब ये सब इमेजरेबल है, इन सबको रेटिंग हम अपने मन से नहीं दे सकते। लाइक अटेंडेंस का तो है कि 30 में से 25 दिन आया,
इसको रेटिंग नहीं कर सकते कि पर्सनैलिटी 30 में इसको 25 रेटिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकती हो। रेटिंग तो होती है, तभी तो अप्रेजल होता है, लेकिन इसको रेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसको रेट करना मुश्किल होता है ऐसी चीजों को कि अब कोई अच्छा है तो तुम क्या कैसे बता सकते हो? डिग्री ऑफ अच्छाई तुम कैसे डिस्कस कर सकते हो? कितना अच्छा है, मैम ने डांटा, कितना डांटा। ठीक है, इसीलिए वैसा ही है जैसे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसको तुम मेजर नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट कर रहे हैं हम तुमको, कितना डायरेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टूड? तो ये वैसा ही है, मेजर तो होता है तभी तो अप्रेजल बनता है। सो दिस इज नॉट, दैट इज नॉट द थिंग। वो मेजर होता है बट मेजर करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इन परफॉर्मेंस अप्रेजल बोला जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो। द अप्रेजर्स, जो अप्रेज करते हैं, द अप्रेजर्स can sometimes be guided by the appraisers can sometimes be guided by their personal emotions and likes. Their personal emotions and likes. So the ratings are likely to be biased. So the ratings are likely to be biased. B-I-A-S-E-D, biased. Likely. Likely. ज़्यादा chances है कि biased result आएगा. Likely, L-I-K-E, sorry, L-Y, likely to be biased. इस point का क्या मतलब हुआ? Performance appraisal का ये बहुत बड़ा point है। मैम अगर कोई पर्सनल इमोशंस जुड़ा हुआ है तो उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल पे बहुत फर्क पड़ता है रेटिंग्स पे। किस टाइप का को ज्यादा प्रेफरेंस, उसको ज्यादा प्रेफरेंस सर प्रेफरेंस देता है मैम। अधिबा बोलो, फिर से बोलो। मैम प्रेफरेंस देता है अगर कोई पर्सनल देता है, इमोशन या लाइकिंग है। एग्जैक्टली ये चीज आपको समझ में आ गई आराम से, इसमें कोई इशू नहीं है। द अप्रेजर, समटाइम्स जब आप साथ में काम करने लगते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ और लूप होल है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि sometimes when you are close to the appraiser, Anisha, I don't think there is anything funny going on in the class. You have the audacity to switch on the camera and keep laughing. So this is one of the biggest loophole of performance appraisal, कि appraiser का अपना कोई पर्सनल लाइकनेस हो सकता है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा बायस्ड है ना, हम भी बायस्ड हैं चीजों के प्रति। वी लाइक सर्टेन थिंग्स, वी जिस चीज को हम लाइक करते हैं उसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, उसका फ्लॉ हमें नहीं दिखता है, ये होने लगता है ना। वी स्टार्ट ओवरलुकिंग द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव। द सेम थिंग, कभी कभी आपको लगता होगा कोई टीचर किसी स्टूडेंट के प्रति बायस्ड है, ऐसा फील होता है समटाइम्स, इट सो हैपेंस, लाइक आपके एज में ये एग्जाम्पल बहुत सूटेड है, ऐसा होता है। तो दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंस इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट द अप्रेजर माइट बी, इसमें बहुत सारा होता है जैसे हैलो इफेक्ट और ये वो बहुत सारा है, उतना डिटेल नहीं जाना है तुमको। वो चीजें when they are biased towards you, they will overlook the problems in you. तो आप अपने peer से ज्यादा स्कोर कर लेंगे ऐसे केस में, तो फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो वेरी पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ, राइट? Yes, ma'am. Okay. So this was, in today's class we dealt with the importance and the limitations of performance appraisal. Wait 1 minute, Yuvraj, can you hear me? Yes, ma'am. You appeared, you had joined yesterday, no? Then why did you not appear for your mark? Ma'am, markets. What? Ma'am, कहीं गया हुआ था. Okay, fine. So
In today's class, we dealt with all of these things. Now, in the next class, जो दो मेन टॉपिक आपका रह गया है इस चैप्टर में, परफॉर्मेंस अप्रेजल में, उसमें एक मेथड है. मेथड थोड़ा डील करना होगा, समझाना होगा. And since method is a bit longer, so I'll not dictate you in the class. I'll give you the content. You write it. You just make it short according to what you want to write. I'll explain everything in class. Okay. And potential appraisal. क्योंकि पोटेंशियल अप्रेजल में आपका थोड़ा एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए बस फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज लिख करके आप यू कैन नॉट गेट अवे, तो थोड़ा सा डिटेल उसको पढ़ा देंगे हम. ठीक है. आज के क्लास में आप ये सुन लीजिए कि मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है. देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटी होती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ वेरी सिस्टमैटिक, अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड is a very technical work which is carried out by the organization. क्योंकि आपने पढ़ ही लिया कि कितने तरीके के नीड इससे फुलफिल होते हैं, राइट? होते हैं ना? This is very important for judging an employee's capability. Now, the methods of performance appraisal have been divided into two broad categories. एक मेथड्स हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स और एक पढ़ते हैं हम मॉडर्न मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब वो मेथड्स जो पास्ट ओरिएंटेड हैं, all those methods which are past oriented, and modern methods means those methods which are future oriented. This is needless to discuss. We have discussed it multiple times that the nature of business has changed. Now the businesses are working in an extremely dynamic situation where everything is changing very rapidly. Everything changes rapidly. So probably because of this reason, the past methods or the traditional methods do not have the ability to cope up with the changing business environment. कहने का मतलब, they are not capable of serving the purpose that is driven out of performance appraisal in an organization. Okay? कुछ flaws रह गए उसमें जो modern business के need को cater वो नहीं कर सकते हैं. That is why we shifted towards modern appraisal methods. Traditional methods ऐसा नहीं है कि बिल्कुल obsolete है. There are some traditional methods which are still used, but they are used in probably a more classical kind of organization, in a smaller organization. But for an organization which is as huge as Reliance, as diverse as Reliance, which needs to grow, which needs to keep in pace with the changing business, which needs to keep itself number one, for all these extremely competitive and competent kind of business houses, they have shifted to modern methods of appraisal. हम बार बार emphasize कर रहे हैं इस बात पे कि 360 डिग्री मेथड ऑफ अप्रेजल ना सिर्फ आपके बीबीएम कोर्स के लिए आए ना आए, ऐसे भी आप याद रखिएगा. अगर बीबीएम के ऊपर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, ये मेथड ऑफ अप्रेजल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मॉडर्न जो बिजनेस हाउसेस है वो यूज कर रहे हैं. क्योंकि इन बिजनेस में काफी कुछ न्यू ऐड किया गया, इस अप्रेजल मेथड में काफी कुछ न्यू ऐड किया गया है which were never seen in traditional methods. So in the next class we will deal with the types of traditional methods and the types of modern methods. Okay? Yes, ma'am.